अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं जी CS403 के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट MCQs, यानी जो पास्ट पेपर से लिए गया और जो ज़्यादा क्विज में भी आ रहे हैं। सो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। पहले MCQs है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट DFT। DFT का क्या चीज़ फीचर नहीं है, तो हम देखते हैं जी इसका सब प्रोसेस विच एक्सप्लेन एंड डिकम्पोज द मेजर प्रोसेस इनटू स्मॉल प्रोसेस। ये आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं पेज 62 पे जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेशनल मॉडल। मैं इसके आपको राइट आंसर बताती जा रही हूँ। Constraint is a rule that restricts the value in a database. Which one of the following four ER diagram is a typical result you obtain when you initially start with an ER diagram containing just two entities, A and C, in a many-to-many relationship, and then introduce an associative entity, B. देखें, अब हमें यहाँ चार डायग्राम दी गई हैं। अब हमने चेक करना था ER डायग्राम को तक करना था हमने A एंड C एम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप चेक करना था, ठीक है। और हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी क्या थी, B थी। A हमारे पास जाता है जी B तक, B हो जाता है C तक। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, ये I होगा और ये M हो जाएगा, फिर M B के साथ M आएगा और C के साथ I होगा। ओके, ये इसकी आप कर लें, इसकी एक अलग कर लें भी, ये इसका होगा पॉइंट, मतलब AIMMI। Which of the following most certainly implies the need for an entire table to implement a ternary relationship? Which of the following constraint enforces entity integrity? Not null. Which of the following is not true about relational table? The sequence of row is significant. In a conceptual model for a university, what type of relationship exists between grade and student entities? 1M. Controlling redundancy in our database management system does not help to avoid unauthorized access to data. Which one of the following is incorrect with respect to file system? A logical record is concerned with efficient storage of information in the secondary storage device. Which of the following functions are not performed by database administrator? Communicating with database users. आप लोग का था इशू आ रहा था कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ। और रहा मसला प्रोनाउंसिएशन का, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेहतरीन है, आपको कोई परेशानी ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो ना देखें। Select the correct statement about the NC/Spark architecture. The conceptual level is a level of indication between the internal level and external level. Which one of the following is the correct way to implement one-to-many relationship by designing table? By splitting the data into two tables with primary key and foreign key relationships. Which of the following is not benefit of normalization? Maximize redundancy. देखिए मेरे पास से नॉर्मलाइजेशन लेक्चर नंबर 21 पे है। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ होती है, ये सारा आप देख लें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए नॉर्मलाइजेशन का एग्जांपल आ गई थी, ये इसमें 3NF और 2NF 6NF यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक DB डिज़ाइन मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन क्या, तो आप वो आंसर दे सकते हो। कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिलेशन आर एंड इट्स सैम्पल data, consider that these are the only tuples for the given relation. ये tuples हमारे पास हैं जी। Which one of the following statement is not correct? अब नॉट करेक्ट कौन सी है जी? द फंक्शन डिपेंडेंसी EMP नो यानी नंबर, EMP नंबर है, और प्रोजेक्ट नंबर बिलोंग टू डेप्थ नंबर होल्ड ओवर R.
The entity relation model models entities and relationships. As a part of database naming convention, attributes names should use suffix such as id, number or a code for the dash. इसका आंसर आएगा जी for the primary key. User right information is stored in a catalog. Making a change to conceptual schema of a database but not affecting the existing external schemas is an example of logical data independence. ये बता रहे हैं जी अगर चेंज की जाए कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में जो कि डेटाबेस की एक चीज़ है हिस्सा है पर वो अफेक्ट न कर सके जो उससे पहले मौजूद था एक्सटर्नल स्कीमा उसके अंदर तो किस चीज़ एग्जांपल होती है वो होती है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की. Which of the following is not a feature of context DFT? ये दोबारा रिपीट हमारे पास हो रहा है जी सब प्रोसेस. A relation from the relational database model consists of set of tuples, which implies that all tuples in a rational in a sorry all tuple in a relation must distinct. Choose the symbol that correspond to discriminator attribute. हमारे पास ये सिंबल थे ये डिस्क्रिमिनेटिव एट्रीब्यूट का सिंबल हमारे पास आ गया है जिनके नीचे नाइन्स होती है ना और स्कोर होते हैं ना वो चीज़ें. Identify the constraint that limit the value that can be placed in a column. चेक होता है जी जो constraint को लिमिट करता है वो वैल्यू जो प्लेस किया है कॉलम के अंदर यानी कॉलम के अंदर जो वैल्यू प्लेस की जाती हैं उसी के constraint लिमिट प्रोड्यूस करता है ना तो जो constraint होता है ना वो चेक होता है उसे चेक कहा जाता है. Given are the relation of student and instructor, ये relations हैं जी हमारे पास. Consider the following table obtained using student and instructor relation. Which relational algebra operation could have been applied on the pair of relations student and instructor to obtain the above data? तो हम algebra देखेंगे जी instructor minus student. Identify the correct statement with respect to normalization. अब नॉर्मलाइजेशन जैसे हम देख चुके हैं 21 लेक्चर का है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 21 लेक्चर कीजिएगा. नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज्ड एज अ टॉप डाउन स्टैंड अलोन डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक. कंसिडर द रिलेशन इंटरव्यू कैंडिडेट नंबर इंटरव्यू डेट इंटरव्यू टाइम स्टाफ नंबर रूम नंबर एंड द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज. ये जी हमारे पास 3 डिपेंडेंसीज थी तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट होगा. द रिलेशन इंटरव्यू इज इन 3NF. ये स्टाफ नंबर इंटरव्यू डेट बिलोंग्स टू रूम नंबर. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन. One cannot consider something which has conceptual existence like a course in a degree program as an entity. Structural constraint of a relationship type refer to whether the existence of entity depend on it being related to another entity by the relationship type. A collection of concepts that can be used to describe the structure of a database is known as called data model. An entity can be logically connected to another by defining common attribute. The dash constraint specifies whether each entity supertype occurrence must also be a member of at least one subtype, that is, completeness. Database management system, operating system, application and utilities are examples of software. Which one of the following concept is applicable with respect to 2NF? Full functional dependency. अब हम देखेंगे यहाँ पे 2NF है ना जहाँ भी हमारे पास 2NF आएगा ये फुल हो जाएगा लेकिन जहाँ हमारे पास 3NF आएगा ना हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा. सो यहाँ भी 2 है तो हम ये ज़हन नशीन रखें कि फुल फंक्शन होगा इसमें. इसके बाद है जी अ डेटाबेस सिस्टम अलाउ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब क्या चीज़ वो अलाउ करता है इसके अलावा ना एनी यूजर टू एक्सेस ऑल इट्स डेटा. यूजर राइट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैटलॉग. द ER database the ER data model is an example of conceptual data.
database. Which of the following is true about not null constraint? Prevent any action that would destroy link between table. ये not true है जी. With the corresponding data value. ये दोबारा से हमारे पास repeat हो रहा था, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं. Consider the following diagram depicting a kind of relationship type where x and z are entities and y is a relationship type. आहिस्ता पढ़ना बहुत मुश्किल है. Select the correct statement among the following on the above diagram. The relationship type y is of coordinate ratio 1 point या 1 ratio n होता है. ये ratio signs होते हैं जी. Select the correct statement among the following. Correct statement कौन सी है जी? When different entity type participate only once in a single relationship type, it is called recursive relationship. ये recursive relationship की definition भी है. जब मुख्तलिफ entity type participate करती हैं एक single relationship के अंदर, उसे हम recursive relationship कहते हैं. Which of the following is true about relational schema? Values are atomic. Consider the given relationship. ये दोबारा हमारे पास वही आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है. मैं यहाँ अलजबरा चेक नहीं करना, वहाँ अलजबरा करना था. Student and instructor are as given below. Please note the frame and L name also denote the first name and last name respectively. इसका आंसर हमारे पास आएगा जी. The set operations such as Cartesian product and division can be applied on these two relations. देखें जिन MCQs को मैंने आपको यहाँ अगर नहीं लगे होते मैं आपको बुक में से ढूंढ के आंसर्स बताती हूँ. सो ये कहना कि आधे MCQs करेक्ट नहीं, उनका ऑप्शन बताया गया था, तो इसका क्या फ़ायदा. तो मैं आप मेरी पूरी वीडियो आराम से देखा करें, सुनना करें, समझा करें, मैं आपको ढूंढ के सारी चीज़ें बताती हूँ. Following relation are a sample data type. Consider that these are the only tuples for the given relation. ये दोबारा हमारे पास repeat हो रहा है जी. The function dependency EMP number, project number belong to depth number hold over R. A collection of related data is database. A weak entity type both A and B. A description on a particular collection of a data using the given data model is schema. If K is a foreign key in relation R1, then K is a key for some other relation. ये इसका था आंसर. Consider the following statement. ये statement हम देखते हैं जी. Identify which of the above statement is correct. सिर्फ पहली correct है जी. An entity integrity constraint state that no primary key value can be null. Which of the following constraint enforces entity integrity? Not null. ये हमारे पास दोबारा आ रहा है, नहीं ये रिपीट में नहीं है, इसके बाद आएगा. Which one of the following ER diagram must most correctly represent the relationship between student and grade entities? देखें student has grade लिखा तो सारा ये हुआ है, लेकिन हमें जो चेक करना है वो लाइंस का खेल है. स्टूडेंट पे हमारे पास एक लाइन जा रही है और एम के साथ हमारी डबल लाइन जा रही है. देखिए यहाँ पे एक के साथ वन के साथ डबल लाइन है, गलत हो गया. यहाँ वन के साथ दोबारा डबल लाइन है, अगेन गलत. पहले हमारे पास वन आएगा, स्टूडेंट वन एंड एम ग्रेड. ये है जी इसका ट्रू आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट एनफोर्स एंटिटी. ये दोबारा हो गया जी. नॉट नल विच रिपीट हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनफोर्स अ रिलेशन इनटू फर्स्ट नॉर्मल फोर्स. The domain of attributes must include only atomic value. अब ये consider करें जी इस चीज़ को. The following ये था इसका, और देखिए इसका मैंने full check किया. अब देखिए consider the following set of function dependencies. FDS on the following relation schema. EMP no, ename, bdate, address, depth number, dname, mgr name. The additional FD which can be inferred from the above set of FDSs. अब हम देखते हैं जी यहाँ पे EMP नंबर, डी नेम, यहाँ डी नेम, ई नेम हमारे पास ठीक है, MGR नेम. अब हम देखते हैं जी EMP नेम, डेप्थ नेम. EMP नेम, डेप्थ नेम, डेप्थ नंबर था ना, EMP नंबर और डेप्थ नंबर था. EMP नेम, डेप्थ नंबर, MGR, ये है जी इसका करेक्ट. Which of the following is a feature of primary key constraint? Unique identifier for a row within a database table. Structural
Constraints of a relationship type refer to whether the existence of an entity depends on its being related to another entity via the relationship type. Which of the following is true about relation schema? Value are atomic. A dash relationship exists when association is maintained within a single entity that is unary. Which of the following is correct way to implement one-to-many relationship while designing table? By splitting the data into two tables with primary key and foreign key relationship. Identify correct statement. Entity integrity constraints are specified on individual relations. A software package designed to store and manage database management system (DBMS), who is responsible for authorizing access to database for coordinating and monitoring its use. Select correct option, database administrator. Consider the following. ये दोबारा हमारे पास रिपीट हो रहा है कि हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है जी. Which of the following ये not correct, ये not correct में हमारे पास आ रहा है. EMP number, project number, depth holdover और the function dependency. इसके ऊपर हमें डायग्राम नहीं दी गई थी. Which feature of database provide conversion from inconstant state of DB to constant state, ensuring minimum data loss? Select correct option, recovery service. Consider the following statement. ये consider करें तो इसमें देखिए क्या चीज़ ठीक है. With respect to the NC or Spark 3-level database architecture, which of the above is correct? B and C. Internal or external level of a database architecture consists of the physical view of the database or provide the user view of the database. ये correct थी हमारे पास. The ER data model is example of conceptual database. दोबारा repeat हो गई. ये फिर हमारे पास repeat आ रही है. Which of the following constraint enforces refractional integrity? Foreign key. Student and instructor ये दोबारा हमारे पास repeat हुआ है जी. Here we go. देखिए अब हम यहाँ चेक करें. ये दोबारा अब देखिए consider the rational interview, candidate number, interview date, interview time, staff number, room number, and the following function dependencies. ये functions हमें दिए गए थे. Which one of the following is correct? क्योंकि हमने अब इसमें देखना था 3NF के बारे में. ओ ये तो वो वाला नहीं है. ओके ये दोबारा रिपीट हो रहा है. वो the relation interview is in 3NF. वो 2NF और 3NF. Which of the following is incorrect statement concerning the database design process? During the logical design phase of internal storage structure, access path and file organization for the database file are specified. Consider the following diagram depicting a kind of. ये दोबारा repeat हो रहा है जी. Identify the correct statement. ये भी दोबारा repeat में आ गया. अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सी correct statement है. When diffraction integrity rules are enforced, a tuple in one relation that refer to another relation must refer to an existing tuple. Identify the correct way to implement one-to-one relationship in a table. One-to-one relationship in a table हम implement कैसे करते हैं तो जी. A single table and rarely as two table with primary foreign key relationship. तो आगे हम करते हैं जी इसका. इसे हम दोबारा करते हैं. A collection of database is later data is database. Definition at database की दोबारा हमारे पास repeat था ये. A collection of concepts that can be used to describe the structure of database is called data model. A super key that does not contain a subset of attribute that itself a super key is called candidate key. वो super key जो किसी subset को contain नहीं करती अपने attributes के अंदर और वो खुद बजाते खुद एक सुपर की होती है, उसे क्या कहते हैं? वो कैंडिडेट की कहा जाता है. As a part of database naming convention, attributes name should be used suffix such as ID, number or code for the primary key. 2NF का था जी full functional dependency. इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा रिपीट में आ गया है. रिपीट को हम नहीं करते. Identify the factor which enforce a relation in 3NF.
अब वो 2NF था ना, अब यहाँ 3NF को हम आगे आगे पढ़ेंगे. The domain of attribute must include only atomic values. Consider two set A and B. A contain 2 elements and B contain 3. How many elements do their Cartesian product contain? Cartesian product में हम multiplication करते हैं तो 3 multiplied by 2 6. Identify the operation which is not one of the part of the 5 basic set operation in relation algebra. Join. Join हमारे पास नहीं होता बेसिक में. कार्टेशियन होता है, यूनियन होता है, सेट डिफरेंस होता है, इंटरसेक्शंस होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कंसिडर करें और बताएं क्या चीज़ ठीक है इसमें. देखिए ये दोबारा रिपीट हो रहा था. एन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट नो प्राइमरी की वैल्यू हैज़ नल. यूजर राइट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कैटलॉग. अगेन रिपीट में आया, ये भी रिपीट में था. विच इन्फोर्स द रिलेशन इन 2NF. ये दोबारा रिपीट में आ रहा है. ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.